Okay. This is for those who are listening to the recording. I started recording a bit late, but I will explain the previous portion जो भी miss हुआ है after I complete this class. ठीक है? So you can start from here. There is no issue. The only thing that I have taught till now is the classification of carbohydrates on the basis of hydrolysis products. So I have monosaccharide unit, I have oligosaccharide units, and I have polysaccharide unit. Next classification that I have done is on the number of carbon atoms. So on the number of carbon atoms, you have triose, tetrose, pentose, hexose, and so on. And also, I have also classified on the basis of on the basis of the functional group. So if I have aldehyde, then those are known as aldose. If there is ketone, those are known as ketones. If I combine both the namings on the basis of number of carbon atoms and naming on the basis of the functional group, then I will get names such as, if I have 3 carbon atoms and aldehyde, it will be aldo triose. If I have 4 carbon atom and ketone, this will be keto tetrose, and so on. Okay, so you'll see all of those things. And then I have talked about reducing sugar and non-reducing sugar. Okay, so the important slides that you have to screenshot these slides. I will wait for 3, 4, 5 seconds. This is for the one who are seeing the recording. I forgot to record from the starting of the class. Please screenshot this. Note this down. Then you can also screenshot this and note it down. And then you can screenshot this and note this down. Okay, so this is the summary of the class. Now, coming back to this question. Now you can also attempt this question. Those who are listening to the recording, you can attempt this question now. Okay. Fine. Astha, Minashi, Sara, Rehan, correct? Chaliye. Raise your hand if you're having difficulty. Raise your hand if you're having difficulty. Please raise your hand quickly. जो लोग आंसर नहीं किए हैं, जो आंसर नहीं कर रहे हैं, please raise your hand. If you're having difficulty, अच्छा, first raise hand. Hamza. Hamza, can you turn your mic on? Hamza, mic on. Can you hear me, Hamza? Yes. Wait, I can't hear you. Just a second. आपका एक बार माइक खराब हुआ, उसके बाद से बना ही नहीं है लगता है. Just a second, Hamza, let me plug in my earphone. Hamza? Yes, sir. हाँ, now I can hear you also. First of all, आप ये classify कीजिए. It is aldose या ketose? Tell me. Aldehyde group दिख रहा है आपको या फिर ketonic group दिख रहा है? Hamza, keep your mic on ना and tell me. Hamza, your mic is off. क्या हो जाता है बच्चों को अचानक से? Anyone else who is having problem here? Hamza की तो आवाज नहीं आ रही अब. Anyone else who is having problem here? No. सबको आ गया? Yeah, I have got most of the answer and those the answers are also correct. हाँ, Hamza बताइए. Sorry. It is aldose. Aldol. Aldose. Aldose है. कहाँ पे है आप बताइए तो? Which carbon atom is having aldehyde group? हमजा, एल्डिहाइड ग्रुप कैसे लिखा जाता है बताइए तो जरा. CHO कहीं दिख रहा है आपको? CHO कहीं दिख रहा है आपको हमजा? हाँ, क्या दिख रहा है आपको? C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन एटम एंड इधर भी कार्बन एटम. यहाँ पे दिख रहा है आपको सेकंड कार्बन में? कौन सा ग्रुप है ये? कीटोन ग्रुप है ना, तो कीटो होगा. ऑब्वियसली आपके पास ये एल्डो पेंटोस और एल्डो हेक्सो से चला गया. एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 3 4 5 एंड 6.
क्या आंसर होगा बताइए? कीटो हेक्सोस होगा या हेप्टोस होगा? हेक्सोस। आसान था। Yes, sir. ठीक है, चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर दैट दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कीटो हेक्सोस, दिस विल बी कीटो हेक्सोस. Now we are going to learn about glucose. Now glucose is a monosaccharide unit. Okay, it reduces both Felling's reagent and Tollens reagent, and it is also known as dextrose. This is important information. आपको 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है. What is on another name of glucose? उसमें एक रहेगा dextrose, because it occurs in nature principally as optically active dextrorotatory isomer. In nature, it occurs as what? It occurs as dextrorotatory. It occurs as dextrorotatory, and that is why it is known as what? Dextrose. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक ऐसे करके ग्लूकोज हेडिंग डालिए, फिर वहां पे क्या लिख लीजिए? डेक्सट्रोज, ऐसे. Okay, just write dextrose there. Sources are what? Glucose, ripe grape, honey, cane sugar, and so on. These are the sources. Now, right next, the preparation of glucose. Preparation of glucose can be done by 2 methods, from cane sugar and from starch. Okay, now this is the most common method of preparing glucose. Now from cane sugar, by acid hydrolysis of cane sugar, we are going to get what? We are going to get glucose. Now what is cane sugar? In cane sugar we have actually sucrose here, and sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution. Then glucose and fructose are obtained in equal amount. What is the reaction? Please see. ये आपके पास reaction. If you have sucrose, you do hydrolysis in the presence of acid, you are going to get 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. आपको लग रहा होगा सर फॉर्मूला तो सेम है. हाँ, आइसोमर है भाई. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, बट सब डिफरेंट है. राइट दिस डाउन. प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में इस रिएक्शन को लिख लीजिए. So what are we getting? These are important riddles. Okay, सुक्रोज से हमको क्या मिल रहा है? We are going to get glucose है ना. You are getting GF here. Those who are not getting GF, what they can do? They can just hydrolyze the sucrose. You will get glucose also, you will get fructose also, and you can be happy also. है ना? So what you need to do? You need to just hydrolyze the sucrose. You need to just hydrolyze the sucrose. You will get glucose and fructose. You can get glucose and fructose. Please write this down. Done everyone? Yes or no? Please tell me. क्या मिलेगा सुक्रोज से? Tell me guys, what will you get from sucrose? Glucose and fructose. Yes, you are going to get glucose and fructose. Now, right next, preparation of glucose from starch. अब देखिए ये जो स्टार्च है ना, स्टार्च हम लोग खाते हैं, ठीक है ना. केन शुगर भी खाते हैं हम लोग, बट केन शुगर वो आपका चीनी बनाने के लिए यूज होता है. बट स्टार्च वी ईट, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज undergoing in our body also. First of all, you have starch, that is a polysaccharide. Starch आपके पास क्या है? Complex carbohydrate है, उसको break down करना पड़ता है. So complex carbohydrate, you have to break it down. The starch we use diastase. Diastase से क्या मिलता है? Disaccharide. ठीक है. Diastase से क्या मिलता है हमको? Disaccharide मिलता है, that is maltose. And then maltase, that is an enzyme that is used to give you glucose. ठीक है. That is used to give you what? Glucose. Now, glucose is also obtained by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin under pressure. But see, these are the two methods. ये जो enzyme वाला method है, that is done by our body on its own. Starch is there. There will be diastase enzyme that will convert it to maltose. Now, maltose will use maltase to get glucose. ठीक है. So please remember, di is used to give di. ठीक है. Disaccharide के लिए हमको क्या चाहिए? Diastase चाहिए. Then we need maltase. Then we need what? Maltase. Now, in order to convert maltose, what do we need? We need maltase. ऐसे याद रखिएगा. पॉली से डाई करना है तो डाइएस्टेज, माल्टोज से ग्लूकोज करना है तो माल्टेज. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. इसको लिखिए प्लीज. राइट दिस डाउन. डन एवरीवन? यस और नो? प्लीज टेल मी. सबने लिख लिया? Yes. 1 second. 1 सेकंड, जल्दी हाथ चलाइए. ठंड है क्या उधर?
सारा पटना में कैसी ठंड है? ठंड है पटना में? Yes, sir. बहुत है? Yeah, like है, बहुत ज्यादा भी नहीं. बहुत ज्यादा भी नहीं है। खैर अभी तो 12 बज गए हैं। आई होप लाइक सुबह में जब क्लासेस होती हैं तब आप लोग के हाथ ही चलते होंगे स्कूल में, बट अब तो लाइक एटलीस्ट इंडिया में तो 1 बजने वाला है। आई थिंक सारा वुड बी फाइन। व्हाट अबाउट यू गाइस, मिडिल ईस्ट? बहुत ठंड है? ठंड पड़ती है वहाँ? कहीं कहीं तो पड़ती है शायद, हमने सुना है सऊदी में कहीं कहीं बर्फ भी गिरती है। इज दैट राइट हमजा? सऊदी में कहीं कहीं बर्फ भी गिरती है? बर्फ तो नहीं सुना मैंने आज तक, बट बर्फ नहीं सुना आपने? बहुत ज्यादा 13 डिग्री है। 13 डिग्री है? अच्छा हाँ 13 डिग्री है, मतलब कम नहीं बोला जाएगा। ऑल्दो इफ समवन इज इन दिल्ली, कोई दिल्ली का नहीं, नो वन इज फ्रॉम दिल्ली, इन दिल्ली इट इज वेरी कोल्ड। ताइफ, किंजा ताइफ में पड़ती है बर्फ? Yes, sir. लाइक स्नोफॉल? स्नोफॉल? Yes, sir. ओह, तो हमजा आई थिंक नाउ यू हर्ड ताइफ में। ताइफ इज आल्सो बिट ग्रीन राइट? आई थिंक देयर आर रोज गार्डन्स देयर ना ताइफ में? ताइफ में ही है, आई डोंट नो। ताइफ, I maybe I'm getting it wrong, but I have heard that Taif is a bit green. Okay. Yes, sir, it is. Taif has a lot It of is. different things than other cities. Okay. Write this down and tell me the answer. On hydrolysis of sucrose, you will get what? क्या मिलेगा आपको? मतलब लड़कों को तो ये याद रहना चाहिए सुक्रोज से क्या मिलने वाला है। What is the answer, guys? Tell me. On hydrolysis of sucrose, you will get. Yes, Astha, Wafia, Sara, Minashi, correct. Very good. Guys, answer, guys. Rifat, correct. Very good. Hamza, correct. Kinza, correct. Very good. Ishma, Mamuna, very good. Correct. Yes, all of you are getting the right answer. That is going to be 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. Okay, C is the right answer. Yes, Rehan, correct. इसको पढ़िए आप बताइए आंसर. Which of the following is correct regarding glucose? अब इस टाइप के सवाल में आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना? और ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे. सवाल आसान है, अभी हम लोगों ने किया है, सवाल आसान है, पर ध्यान से पढ़िएगा. दो ही आंसर आए हैं अभी तक, आस्था एंड हिश्मा. करेक्ट है आस्था एंड हिश्मा? जी, अरे इतना टाइम लगेगा क्या? नवाल सही, वेरी गुड. सारा करेक्ट. फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए. नहीं नहीं, रेहान सही है, वेरी गुड. देखिए अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो आप लोग को पता है C6H12O6, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं करेक्ट है. बी करेक्ट है, इट कैन बी ओपन. ये तो बहुत आसान, अच्छा हो गया ना, आपके पास बी ही करेक्ट मिल गया. डाइसैक्राइड है? नहीं. मोनोसैक्राइड है. एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नहीं. एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. वो क्या करता है? फेलिंग्स एंड टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस करता है. It reduces the Fellings and tolerance region. So B is also not correct. Okay, so B is correct. It can be obtained by acid hydrolysis of cane sugar. Now, अगला सवाल देखिए.
Starch is changed into disaccharide in the presence of what? काफी आंसर्स आ गए, है ना? हाँ, डाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? डायएस्टीज। इतना आसान सवाल, राइट? चलिए अगला सवाल देखिए। ये हम आपको बताते हैं, देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स हैव नॉट बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, आप लोग को लग रहा होगा शुगर और नॉन शुगर के बेसिस में क्लासिफाई नहीं किया गया, बट इट हैज बीन क्लासिफाइड एज शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर क्या होते हैं? dissolves in water and is sweet, ठीक है? नॉन शुगर्स does not dissolve in water and is not sweet, ओके? तो जैसे आपके पास मान लीजिए चावल है, चावल इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, आई मीन इट हैज मेजर क्वांटिटी, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ही है। Potatoes, they also don't dissolve in water and they are also what? They're also carbohydrates, right? So all of those are non-sugars. But if you have, for example, sugar जो होता है, तो वो तो sugar तो dissolve होगा उसी के basis पे है। Then for same example, brown sugar, that is good can also be dissolved in water, right? And it is also sweet. So these type of things are known as what? These type of things are known as sugars, which dissolves in water and is sweet. Non-sugars does not dissolve in water and it is not sweet. On the basis of reducing character, we have also classified, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई नहीं किया है ना, हैव नॉट बीन क्लासिफाइड है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, हैव नॉट बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, वी हैव नॉट क्लासिफाइड द कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर एंड नॉन शुगर, रिड्यूसिंग में आपके पास रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, राइट? हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस यू हैव मोनो, ऑलिगो एंड पॉली। Okay, so we have classified in all of these bases except the optical activity. We have not classified them on the basis of optical activity. Clear है सबको? Yes or no? Please tell me, guys. Yes or no? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। शांति बनाए रखते हैं। Yes, thank you very much. Tell me this one. क्या है ये A B C D में? सबसे पहले सी वेदर इट इज एल्डो और कीटो। कीटो हो गया तो बहुत ही अच्छा, एक ही जवाब है आपके पास। एल्डो हो गया तो 3 में चूज करना पड़ेगा। आस्था करेक्ट, वेरी गुड। अरे और आंसर नहीं आएंगे क्या? एक ही आंसर आया अभी तक। सारा करेक्ट, 3 आंसर के बाद हम बता देंगे। एक और आंसर आ जाए, रिफत करेक्ट, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड और कीटोन, CHO ग्रुप, राइट? टर्मिनल कार्बन में कार्बन डबल बॉन्ड हो, दैट मींस इट इज एल्डिहाइड, सो इट विल बी एल्डो। 1 2 3 4 5 6, this is going to be what? 1 2 3 4 5 6, 6 carbon atom, this will be aldohexose, this will be aldohexose, ठीक है? Right, next. Two functional group present in typical carbohydrates are, कौन से ग्रुप होने चाहिए आपके पास? देखिए, CHO हाँ हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नो नो नो, कीटोन हाँ हो सकता है, अमीन ग्रुप नो नो नो, हाइड्रोक्सी ग्रुप यस, एल्डिहाइड यस, ठीक है ना? हाइड्रोक्सी ग्रुप यस, कार्बोक्सिलिक एसिड नो नो नो, ओके? सो यू कैन हैव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना? तो OH और क्या हो जाएंगे आपके पास? CHO कैन बी प्रेजेंट इन अ टिपिकल कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate that cannot be hydrolyzed to further give any simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone. Name the type of carbohydrate. क्या हो सकता है? The thing is, it cannot be hydrolyzed. Tell the answer, guys, what it can be. A, B, C, D. Ishma correct, Razan correct. Yes, very good. It will be monosaccharide. Now, see next.
how the structure of glucose was derived. This is an important portion. यहीं पे आपके पास बहुत सारे reactions हैं जो कि glucose के हैं. Okay. The glucose, it has a simple structure of CHO, that is an aldehyde here, followed by CH2OH, followed by CH2OH, CH2OH, CH2H होगा नहीं, CHOH होगा, my bad. It will be CHOH. One, two, three, four CHOH, and the fifth one will be CH2OH. Okay. Now, what are the things that we have to tell about the glucose structure? अगर हम ये prove कर दे that there are 6 carbon atoms and it has one aldehyde group. There are four 2-degree alcohol, and there is one 1-degree alcohol. है ना, यही तो है बस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, यही प्रूफ करना है. देयर आर 6 कार्बन एटम्स, 1 aldehyde group, 4 2-degree alcohols and 1 1-degree alcohol. Is that right? Yes or no? Please tell me, guys. सही है. So we are going to prove these things: 6 carbon atoms, 1 aldehyde group, and 4 2-degree alcohol and 1 1-degree alcoholic group. So first of all, the reaction that was given was the reaction with red phosphorus and HI, heating with red phosphorus and HI. Please write. ऐसे लिखिएगा. On heating glucose with red phosphorus and HI, it forms N-hexane. ठीक है, क्या फॉर्म करता है ये? It forms N-hexane. N-hexane means therefore 6 carbon atoms are present in glucose. Okay, so you write it like this: CHO, CHOH 4 times, followed by CH2OH, red phosphorus in the presence of HI. It is going to give you N-hexane. N-hexane is normal hexane. CH3, CH2, 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 and then again one CH3. Okay, so write this reaction. Please write, all of you will write only reactions, okay? This you can write later on. It gives what? N-hexane. There is also heat involved, तो यहाँ पे delta sign बना लीजिए. This is the first reaction and first proof. 6 carbon atom हो गया. Secondly, glucose reacts with hydroxylamine. Glucose reacts with hydroxylamine and hydrogen cyanide. Therefore, we can say carbonyl group, या तो aldehyde है या तो ketone है उसमें, कम से कम carbonyl group is present. I hope you have written the reaction. Now you will write the reaction for these two reactions. You have CHO, then you have CHOH 4 times, and then you have CH2OH. Now, when I react this with, what is hydroxylamine? NH2OH. If you remember from
the aldehyde ketone carboxylic acid chapter, we did this reaction in ammonia derivative, NH2OH. So this carbon atom will get double bond nitrogen, which will be having OH. Okay, and this carbon will have the hydrogen as it is. The CH will be as it is. Oxygen की जगह double bond N हो गया है. Then you have the same thing, CHOH 4 times followed by CH2OH. Okay, now similar type of reaction is given by HCN. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास एक तो H था, that H is as it is, CHO का H is as it is, and you will attach OH की जगह क्या, double bond O की जगह क्या आ जाता है, OH, and you get a skin group here. Okay, so this is oxime, and oxime maybe this is what, glucoxime, and this is what this is, cyanohydrin. Write these two reactions. Done all of you? Yes or no? Please tell me. G. Done everyone? Yes, sir. So we have found carbonyl group. Next, right? Third. Red phosphorus, Rehan. Red P is red phosphorus. Right, next. Third होगा नहीं, ये fourth होगा, third होगा. It gets oxidized by Br2 aqueous bromine water to form 6 carbon atom, 6 carbon carboxylic acid. छह कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक ही है, ठीक है ना, 6 के 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड. This is known as gluconic acid. It tells you about, shows the presence of aldehyde group, because carboxylic acid तो तभी बनेगा, कीटोन तो ऑक्सीडाइज नहीं होता आसानी से, and we are using a mild oxidizing agent, that is Br2 aqueous, and it is getting oxidized to what, carboxylic acid. So please see, you have CHO, you have CHOH 4 times followed by CH2OH, and when you are going to oxidize it in the presence of Br2 aqueous bromine water, you will get COOH. The rest of the things will be same, CHOH whole 4 and CH2OH. This is what glucose. Write the reaction. This is gluconic acid. Shows the presence of aldehyde group. देखिए ये दोनों चीज में आ सकता है, ठीक है ना. How show that glucose has aldehyde groups, then you will show this reaction. Then they can also ask you this type of question, what happens when glucose reacts with Br2 aqueous. ठीक है, so दोनों तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. ये reaction है, and it is also proof that aldehyde group is present
एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज एंड नॉट कीटोनिक ग्रुप, है ना। तो कार्बोनिल हो 6 कार्बन, कार्बोनिल, कार्बोनिल में से क्या है, कीटोन है या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। कैसे ऑक्सीडाइज कर दीजिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 aqueous से, you will get carboxylic acid. Then we have proved the 6 carbon and aldehyde group. तो अब बचा क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के बारे में, ठीक है ना। So now we will turn towards this hydroxy group और इसके सारे रिएक्शंस देखेंगे हम लोग। Done everyone? Yes or no, please tell me. Done, sir. Write the fourth one. See the fourth one. Reaction लिखिएगा आप लोग, please see. Acetylation of glucose. Acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentaacetate. ठीक है, तो it reacts with acetic anhydride. That means OH group is present. And how many? 5 OH group is present. So it gives, therefore, we can say that glucose has 5 OH groups. CHO, CHOH, whole 4, and CH2OH. Acetic anhydride, CH3, C double bond O, bonded to oxygen, bonded to double bond O, bonded to CH3. ठीक है, now here what happens, all the OH, ये जो है ना, OH के पास lone pair electron है, all of these OH are going to attack onto this particular carbon atom like this. Now you will have a bond between oxygen and carbonyl carbon, and this group will leave as it is. ठीक है, so you will get the CHO as it is, followed by carbon, this hydrogen bonded to oxygen. This oxygen is bonded to a carbon atom which is having C double bond O. This is further, देखिए यहाँ से bond टूटता है आपका, and you will get the CH3 that is bonded to C double bond O. This will be 4 times, and here also you will get carbon, 2 hydrogens, oxygen, C double bond O, CH3. This is glucose pentaacetate. Write this reaction. Done everyone? Yes or no, please tell me. Done, sir. Right, fifth. So 1 minute. जी जी लिखिए. Done, sir. एक सेकंड. Yes, right, fifth one. On oxidation with dilute nitric acid, it gives gluconic acid. Wait a second. On oxidation with dilute HNO3, एक सेकंड से लिखिए.
comma, glucose and gluconic acid. Glucose and gluconic acid both give dicarboxylic acid. Both give dicarboxylic acid. That means, what does it mean? Dilute HNO3 के पास ना, it can oxidize both the aldehyde group and the primary alcohol to carboxylic acid. Therefore, aldehyde group तो हमने देख लिया था. अब हम क्या बोल सकते हैं? Therefore, you can say that glucose has 1 degree alcohol. 1 degree OH group लिख देते हैं. ठीक है. तो both glucose and gluconic acid. So the reaction of both are important. देखिए, आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? CHO, CHOH 4 times followed by CH2OH. इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करें, dilute HNO3, then you will get COOH followed by CHOH 4 times and then COOH. And this is what this is known as. This is dicarboxylic acid और इसका नाम क्या होता है? Saccharic acid. Please write. Saccharic acid. You'll get this even if you have gluconic acid. COH, CHOH whole 4 followed by CH2OH. Okay, so this is gluconic acid. And the gluconic acid में आपको पता है कि आपके पास 5 OH ग्रुप है, उसमें से एक OH क्या है आपका? Primary है, that is why it is giving you saccharic acid, that is dicarboxylic acid, and this is glucose. Write this down and write a note. Dilute HNO3 is a stronger oxidizing agent than Br2 aqueous, than bromine water. Dilute HNO3 oxidizes both CHO group and primary OH group to COOH. Let me know once you're done. Then guys, yes or no, please tell me. लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या ना? Done ना? Okay. No. As you saw, we have proved each and everything. Now the stereochemical structure of glucose, it was given by Emil Fischer. Okay, so please write here.
stereochemical structure of glucose. ठीक है, stereochemical structure of glucose. Given by Emil Fischer he said that you have CHO here, okay, and each of these carbon here, they have two groups attached to it. One, and at last you have CH2OH. Okay, so the configuration of CHO, that means aldehyde carbon, is not necessary. Why? Because here you have double bond O and here you have hydrogen. ठीक है ना? This is going to be trigonal planar. Trigonal planar means you can never have a chiral center. You cannot have a chiral carbon here because it is only having three groups. CH2OH में, this is the CH2OH is what? CH2OH is your carbon atom having two same groups, that is hydrogen. See, this can also not be any chiral center, or it cannot be the chiral carbon. Configuration of all of these four carbon atoms are important. So he said that he found out that you have OH and hydrogen here. Here you have plus minus, that is hydrogen, plus plus. Okay, this is going to be your OH, H, and H. All of these four carbon atoms are what? Chiral carbons. All of these are what? Chiral carbons. ठीक है? अच्छा, stereochemistry में अगर इसको देखें हम, तो first of all you will have the CHO and you have this carbon atoms. इनको पहले हम बनाते हैं. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. Okay, these are the 4 carbon atoms. Dash line with CHO. Dash line with CHO. Sorry, CH2OH. All of these are in plane. Then you have these two groups in above the plane. OH here, hydrogen here. OH here. OH here and hydrogen there. This will have the OH on the right side. This will have hydrogen here. Hydrogen here. Okay. Write this down. Both of these are what? Equivalent. Equivalent का साइन होता है ये 3 लाइन जो होता है ना, इसका मतलब होता है equivalent. Okay. This is known as Fisher projection. This is the wedge dash formula. Wedge का मतलब होता है above the plane, dash का मतलब होता है below the plane.
Let me know once you're done. सबने लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। डन ना? सबने लिख लिया? यस। अरे हाँ ठीक है। इसमें आपके पास ना 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और आप बनाइएगा। एक तो आपका one structure is for gluconic acid. Okay, this is what? This is your gluconic acid. And then there is one saccharic acid. Saccharic acid means both of these are going to be COH. Done everyone? आगे बढ़े? Yes or no? यस। Right, next DLN designation. Okay. Now you have to first of all see a structure that is known as the simplest optically active monosaccharide. ठीक है ना? What is the simplest? इसको ध्यान रखिए। इसी के बेसिस में DLN डेजिग्नेशन है। ठीक है, दिस आर नॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको बस असाइन किया गया है, इसका कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेशनशिप नहीं है। सबसे पहले इसको याद रखिएगा, कैपिटल D एंड कैपिटल L। प्लीज राइट हियर सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव, simplest optically active monosaccharide। मोनोसैकेराइड क्या है ये? ग्लिसरल्डिहाइड। प्लीज राइट ग्लिसरल्डिहाइड। This has one CHO, then it has one carbon atom, then it has CH2OH, and यहाँ पे आपके पास क्या है? OH, and this is your hydrogen. This is naturally occurring, and सबसे पहले जब इसको extract किया गया था, we saw that this carbon atom is chiral carbon because it has 4 different groups attached to it. It has 4 different groups attached to it. यहाँ पे आपके पास 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं इसके, या तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन सेम थिंग बट इसका मिरर इमेज। इसके मिरर इमेज में क्या होगा? प्लीज सी, दिस विल बी OH एंड दिस विल बी हाइड्रोजन। ठीक है, दिस विल बी OH एंड दिस विल बी हाइड्रोजन। दिस वाज फाउंड आउट टू बी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, and this was found to be
In the opposite direction minus glyceraldehyde. What is plus and minus? Tell me guys, what is plus and minus? What is plus and minus? ओहो, भूल गए आप लोग। हाँ, प्लस जो होता है आपका, दिस विल रोटेट दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑन clockwise direction. Minus will rotate the plane polarized light on एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? ये आपके पास क्या है, प्लस एंड माइनस है। तो जो ये प्लस वाला था, the plus glyceraldehyde, it was designated as capital D plus glyceraldehyde. इसको क्या डेजिग्नेट किया गया, L minus glyceraldehyde. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है इज राइट, एक टर्म होता है आपका पेन अल्टीमेट। Do you know what is the meaning of penultimate? Penultimate. Penultimate का मतलब होता है सेकंड लास्ट, अल्टीमेट मतलब लास्ट, पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, when the second last carbon atom has OH on the right, it is what assigned the capital D. When it is at the left, it is assigned L. ठीक है, OH on right of penultimate carbon, this will be D. ठीक है, and OH on left will be L. उसको क्या देंगे हम डेजिग्नेशन, L. Sir, Tell me. that is when is the class? Half an hour more. Okay, sir. All of you wrote this down, yes or no, please tell me. All of you done, yes or no? Yes, sir.
CFCHO. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बन ना, पेन अल्टीमेट आपको क्या देखना है, देखिए जो पहला कार्बन होता है इट इज जनरली द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन एटम विल बी एट द टॉप। अगर मान लीजिए एल्डिहाइड है तो सबसे पहला कार्बन होगा, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी कीटोन, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, हियर यू हैव CH2OH, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड या तो आपके पास फर्स्ट में होगा अगर एल्डिहाइड है, या फिर कीटोन है तो सेकंड में ही होगा। ओके, इन बोथ ऑफ दीज केसेस अगर हम इसको यहाँ पे करते बस HNOH। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे देखिए पेन अल्टीमेट कार्बन एटम कौन सा है, दिस इज द पेन अल्टीमेट कार्बन एटम। आपको बस यहाँ पे देखना है डी और एल अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करना है, बट अगेन प्लीज रिमेंबर इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री से कोरिलेशन नहीं है। तो बताइए दिस ए स्ट्रक्चर विल बी व्हाट, डी और एल, क्या होगा, ये डी होगा या एल होगा? OH कौन सा साइड में है, लेफ्ट में है या राइट में है बताइए? A एंड B, A विल बी व्हाट, हाँ सारा करेक्ट। A क्या होगा, A बताइए पहले। A विल बी OH, अगर लेफ्ट में है तो L, राइट में है तो D, दैट्स इट। पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट मींस सेकंड लास्ट कार्बन एटम। ओके, सेकंड लास्ट कार्बन एटम। अगर ये आपको उल्टा भी दिया रहता है ना, प्लीज यहाँ ध्यान रखिएगा, 1 2 3, let us suppose this is CH2OH and this is CHO, OH H OH। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या देखना रहता, यू लुक एट दिस कार्बन एटम सेकंड लास्ट, वन यहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑन द टॉप किसको लिखते हैं, ऑन द टॉप वी राइट द CHO, या फिर कीटोनिक ग्रुप सेकंड में आएगा। ठीक है, सो ऑलवेज लुक एट द पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट कहाँ से देखना है आपको, अपोजिट टू द एल्डिहाइडिक और द कीटोनिक ग्रुप। करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके पास दिस इज व्हाट ऑन द लेफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी L। अगर हम पूरा नाम लिखें इसका तो इट विल बी L, कैपिटल L, and we have what, aldehyde, so it will be aldo 1 2 3 4 5 6, L aldo hexose, and this will be what, D keto 1 2 3 4 5 6, D keto hexose। ठीक है, write a note, DLN designation are not related to optical rotation of sugars। ठीक है, डी और एल का मतलब नहीं है कि डी का मतलब ये राइट साइड आपको रोटेट करेगा एल साइड, ये सिर्फ डेजिग्नेशन है अकॉर्डिंग टू द ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने ये डेजिग्नेशन लिया है बस, इट इज नॉट रिलेटेड टू ऑप्टिकल रोटेशन, प्लीज रिमेंबर दैट। डन एवरीवन, यू सुनो प्लीज टेल मी। इसको लिख के जल्दी बताइए, नोट लिखिए, नोट, नोट इज इंपॉर्टेंट।
All of you done? Yes or no? Please tell me. Let's see next. Cyclic structure of glucose. Okay. So we have the open chain structure, but we also have the cyclic structure of glucose. Why was the why was the need required? Because at the first point, despite having an aldehyde group, despite having an aldehyde group, glucose does not give Skiff's test, and it does not form addition compound with hydrogen sulfide. It does not form addition compound with NaHSO3, है ना? NaHSO3 के साथ एल्डिहाइड अगर है आपके पास या फिर कीटोन है आपके पास, तो आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए. स्किप टेस्ट देना चाहिए एल्डिहाइड को, and it also should form compound with NaHSO3. जो addition compound bisulfide compound हम लोग जो बोलते हैं, it should be also formed, but it does not give both of these things. ठीक है? Now what is skiff test? Skiff test हम लोगों ने नहीं पढ़ा है. Skiff test इसी में है बस आपके पास. ठीक है? Please write. Note. Skiff's reagent. ये स्किफ्स बेस नहीं है, ये स्किफ्स रिएजेंट है. ओके, स्किफ्स रिएजेंट क्या है आपके पास? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड. यहाँ पे आपके पास 3 फिनाइल ग्रुप होते हैं, एक कार्बन से अटैच्ड, ऐसे इसी. एंड सब में आपके पास पैरा NH2 होता है. यू हैव पैरा NH2 सब में एक्सेप्ट इन वन. यहाँ पे SO3H था, उसका हाइड्रोजन किसने ले लिया है? NH3 ने लिया. So you will get a positive charge here and this will be negative charge. Okay, so this will be made if you have hydrochloric acid and this is the Skiff's reagent. अच्छा, Skiff's test में आपके पास होता है क्या? This is the Skiff's reagent. Please write next. Aldehyde restores the pink color एक सेकंड पहले आपको बताते हैं, आपको रीस्टोर का मतलब नहीं पता चलेगा. Skiff's reagent is of पिंक कलर. किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है. ठीक है, राइट नेक्स्ट. पिंक कलर is discharged on passing of सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, पहले स्किफ्स रिएजेंट लिया हमने, पिंक कलर का होगा. पिंक कलर कैसे खत्म हो जाएगा? अगर आप उसमें क्या पास कीजिए? सल्फर डाइऑक्साइड. एंड आफ्टर इफ यू ऐड एल्डिहाइड टू दिस, सो एल्डिहाइड कैन रीस्टोर दैट पिंक कलर. ओके, प्लीज राइट. एल्डिहाइड restores the pink color
restores the pink color when treated with Skiff's reagent. When treated with Skiff's reagent. ये जो है ना आपका ये स्ट्रक्चर, दिस इज decolorized. Decolorized Skiff's reagent. Sir, that point aldehyde restores the pink color of Off हटा दीजिए when treated with Skiff's reagent. okay, sir. Okay, so glucose does not restores the pink color. ग्लूकोज क्या करता है, पिंक कलर रिस्टोर नहीं करता. तो समथिंग इज हैपनिंग हियर विद दिस एल्डिहाइड ग्रुप, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन उसने दे दिया एंड आल्सो गॉट ऑक्सीडाइज्ड. बट यहाँ पे ये कुछ टिपिकल रिएक्शन जो एल्डिहाइड शो करता है दैट इज नॉट गिविंग बाय द ग्लूकोज हियर. Done everyone, yes or no, please tell me. लिख लिया सबने? Let me know if you have not written. Now please write the second point. The pentaacetate of glucose does not react with hydroxylamine, है ना. पेंटासिड अगर आपको याद हो, दिस वाज दिस कंपाउंड CHO CH oxygen C double bond O CH3 whole 4 CH2 O C double bond O CH3. ठीक है, this is whole 4. When you react this with hydroxylamine NH2OH, तो आपके पास ये जो aldehyde group है, this should react, but it shows no reaction here. What does it indicate? It indicates absence of CHO group. But हमने तो देखा था CHO group है भी. So then they propose that जो ग्लूकोज है आपका ना वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी रह सकता है एंड साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर में भी रह सकता है. प्लीज सी, you can write this down. Then you write these behavior cannot be explained by open chain structure of glucose. Therefore, it was proposed that
the OH group, that the OH group may add up to CHO group and form a cyclic structure. All of you done? Yes or no? Please tell me. हो गया सबका? All of you done writing? Done, sir. ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? अभी प्लीज आप लोग कुछ मत लिखिएगा. Let me tell you how this happens here. We have 1, 2, 3, 4. Okay. CHO को ऐसे लिख सकते हैं. Hydrogen. Plus minus plus plus. ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या होता है. You have this OH carbon. This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6 carbon atoms. This OH here, it attacks onto this carbon atom, that is the aldehyde carbon. Why? Because this is delta positive. And अब प्लीज याद रखिए जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह से होगा, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6. This will be CHO. 1, 2, 3, 4. ठीक है. और यहाँ पे आपके पास OH. Now this 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आपके पास OH. तो ये वाला जो है ना, it is going to attack like this here. ठीक है. So you have this type of structure and यहाँ से अटैक करना आसान होगा because it will be slightly near to this carbonyl carbon. So you will get a structure like this. Please see. अच्छा, एक और चीज. Right now it is what? Trigonal planar. But as soon as this oxygen atom is going to attack, as soon as this oxygen atom is going to attack onto the carbonyl carbon, this oxygen atom will leave like this. This carbonyl pi bond will break and oxygen will get the negative charge. Okay. Oxygen from lone pair electron of OH is attacking on the carbonyl carbon and the pi bond between carbon and the oxygen is breaking. So we are going from trigonal planar to tetrahedral. अब tetrahedral में देखिए चारों के चारों ग्रुप्स क्या हैं, अलग है. Now since this is trigonal planar, तो आपके पास दोनों तरह से अटैक हो सकता है, from above the plane और from below the plane. Above the plane हो सकता है also, below the plane भी हो सकता है. So you can get two different isomers here with the attack. Please see.
एक बार अटैक कर दिया कार्बन ने, ठीक है, एंड यू हैव हाइड्रोजन हियर, ठीक है, यू हैव हाइड्रोजन हियर एंड यू हैव द OH हियर। ये OH कौन सा OH है? दिस इज द OH दैट वाज कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन and this oxygen is having a bond with carbon atom like this. This is the oxygen atom. Like this you have the cyclic structure. ठीक है, तो एक तो आपके पास क्या हो सकता है, OH can go in this direction and the other way around is what, or else what else can happen? क्या भाई कॉपी नहीं है? Or else you can have the OH on the left side. Okay, so these are the two positions on which you can have OH. ये आपके पास क्या था? This was the open chain structure. Now oxygen atom can move this side or that side because it is what, trigonal planar. Attack can happen from above or below also. Okay, so you are going to get, these are the two different products. जब आपके पास, when the OH is on the left side, then it is known as beta. And what is this? This is D glucose है ना, ये आपके पास क्या था? This was D glucose. तो ये क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज, and this is known as alpha D glucose. Important part इस वाले इसमें क्या है? Here you have only 4 chiral carbons. यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 chiral carbon है. Okay, alpha and beta glucose अगर आपके पास cyclic structure है, then it is going to be what? It is going to have 5 chiral carbons. Please write this down. एक और चीज ध्यान रखिएगा, these are not carbons, okay? All of you done? Yes or no? Please tell me. लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए। ओके वेट वेट, ठीक है।
Okay, also if you look at the if you look at this carbon atom here, this carbon atom here, this green carbon atom here, it is attached with OH hydrogen and it is attached with O, which is attached with carbon atom. So generally आप इसके structure कैसे ऐसे? See, this is having OH, this is having one carbon, ये आपका दूसरा वाला carbon हो गया, and then this is OR. ठीक है? So it is having what, this is a kind of hemiacetal carbon. Here also it is what, hemiacetal carbon. Okay. And there's a difference in the stereochemistry at the hemiacetal carbon atom. And when you have a difference like this, it is known as anomers. These type of isomers are known as what? Anomers. And this carbon is also known as anomeric carbon. This carbon is known as anomeric carbon. Okay, sorry, points लिखेंगे. First of all, write this down. Let me know when you're done. ये ब्रैकेट्स आप हटा सकते हैं वैसे. To write the brackets. Anyone still writing? Done? Okay. Right, next. The hemiacetal or acetal carbon in carbonate chemistry, in carbohydrate chemistry, are called anomeric carbon. And diastereomers differing only at the anomeric carbon are known as anomers. Okay. Also right. Alpha form and beta form of glucose are called anomers. Are called anomers. ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगा ना तो ये इसमें लिखा रहेगा. ठीक है, तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? एनोमर्स. ऑल्सो वन मोर पॉइंट, बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म. Beta form is more stable than alpha form because the OH group of anomeric carbon is at more stable equatorial position. ये equatorial position वाला जो बात है ना, that you will understand when you have when we are done with Haworth projection. That is the next topic, Haworth projection. Haworth projection is the last topic. Then you have
सिंपल थिंग्स अबाउट फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में बस आपको अल्फा फॉर्म उसका बीटा फॉर्म जानना है, एंड इट्स वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज, ठीक है। एंड देन यू हैव फ्यू पॉइंट्स अबाउट डाइसैकराइड्स जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि सुक्रोज किस क्या क्या देता है, एंड देन यू हैव माल्टोज वो क्या क्या देता है। देन इज वन स्मॉल टॉपिक ऑफ इन्वर्जन शुगर और इन्वर्जन और इन्वर्ट शुगर। देन उसके बाद यू हैव पॉलीसैकराइड्स थोड़ा सा यूनिट, ठीक है।